Uh, Hi guys, this is Prashant here, once again back on my channel, Indian Trifler Standup Comedy King Show. Yo, welcome to episode 7. I actually got lost in that song called Never Back Down, and mind you, that song is not meant for humans, it's meant for you know what's going on. If you have seen my last episode, you must remember that we celebrated COVID's birthday anniversary. So COVID is no more a teen, and COVID has risen its heads once again. That's why I dedicate this song "Never Back Down" to the supreme COVID, which has made the whole world stand still. Stay with me. So guys, this time around I have done a bit more of research, and I've got certain insights from certain reliable sources, also known as the mainstream media. I will share the links below in the description box and the comments that relates to everything that I'm going to talk about. So let's go. This COVID-19 is the only virus in the history of mankind that seems to have a brain of its own. It's highly intelligent, and it is also highly obedient. I'll tell you how. First, it affects. It started affecting senior citizens, those 60 and above. Then it got bored of living and thriving on their bodies, so it's shifted its host to adult people who are above 45. Then it shifted its target. It started targeting the youth, and as of late, it has started affecting children and kids. So it's very choosy when it comes to who it's going to affect and who it is not, and it does so in a very planned and sequential manner. You see, it's actually very considerate in nature. It's not like the other viruses of the past, which were not so choosy. It would affect anyone as long as the environment for its survival was provided. Here, this particular virus is very choosy. Apart from the age and other health conditions of the individuals, it has very strong likes and dislikes. For example, it loves airports. That's the reason every airport in the world, whenever it's been opened, strictly following social distancing norms, hygienic procedures, etc., etc. But most of the time, in the last 2 years, the airports, many of the airports have been closed. So the point is, COVID loves airports like hell. Probably it's a fan of Tom Hanks from the movie Terminal. If you remember, a refugee kind of a guy. He spends quite a bit of time stranded at an airport. He literally lives at the airport. So this COVID-19 is also something like that. It loves the airport, but it's scared of heights. It's afraid to board flights. It doesn't enter flights at all, because flights, whenever they fly, usually they are flying jam-packed. No social distancing, nothing at all, because I think the airline operators are pretty aware that COVID hates flights. It usually doesn't fly, but when it does fly, it chooses to fly only when there's a wedding on a flight, and then it makes all the people on board the flight to get grounded because of this reason. Apart from this, Corona or COVID, they say it originated from China. I mean, who the hell knows whether it was a bat or a monkey or a chicken or a human being or a laboratory for that matter, but somewhere in China, right? But it hates China like anything, so it quickly flees from China, and then it came to India, and it really loves India. It is finally settled in India. That's the reason there's been so much of
staggered lockdowns in various parts of India, because COVID is roaming freely across India. But again, it has certain strong likes and dislikes. For example, when in India, it hates to go to cinema theaters and other public places, but it loves to stay at temples and religious places. That's the reason most of the governments have closed or locked down these kind of temples and religious places, but the cinema theaters and other public places are kept open, although for limited hours. But maybe the authorities are intelligent, so they know where would COVID roam around and where it would not. In certain places, COVID also likes to follow the odd even rule. On odd days, it avoids, does COVID walk or fly or whatever, it avoids moving towards the right side of the street. On even days, it avoids moving towards the left side of the street. That's why many of the governments have made this provision of allowing shops to open left and right on odd and even days, because they know which day COVID will walk or fly from which side of the road. So COVID is very, very particular and very methodical and calculated in this. That's why I said COVID is really, really, really intelligent. Apart from this, there's been a research that COVID really, really dislikes, those who fag and booze, smokers, drinkers, or so it doesn't affect them at all. It doesn't even go near them. Probably it doesn't like the smell of the cigarette or the alcohol, liquor. I don't know. I'm not sure. It has very strong likes and dislikes. Sorry. And going forward, what my sources have revealed is this corona thing, this COVID thing, it likes celebrities, it likes VIPs, it likes politicians, it likes the rich and elite, and it is shit scared. It is shit scared of poor people, the real poor people. People like those who live in the slums, who are rack pickers, who are just surviving by the day, probably manual laborers, scavengers, and people like that, who probably don't get the opportunity to lead a very hygienic life. And mind you, my sources have revealed that COVID also dislikes them too much. And apart from this, another thing which my sources have observed and revealed to me is from the very beginning. From the very beginning, this COVID has been very choosy. Right from day one, it has avoided major logistic hubs like Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Tokyo, Seoul, Egypt, UAE, Portugal. I mean, there are so many such logistics quite considerate. It even has a heart, I feel. It really doesn't want people to starve of the basic essential items and other business materials that are transported through ships and through these various ports. So it has clearly avoided all of these logistics hubs throughout the last 2 years. So in that sense, I think COVID has a heart along the way. And it's really, really wonderful. And the latest example is that right from beginning, it's been very much concerned about two specific countries. One is Japan and the other is Qatar. Japan, obviously, we all know that recent Olympics were conducted. So COVID did not dare enter Japan because it wanted the Olympics to go through. COVID did not want all the Olympic sponsors and businesses to suffer a loss. So COVID did not dare Japan. And it's even doing the same thing with Qatar, because in Qatar we have the football FIFA, right? Probably by next year, by end of this year, next year, I'm not sure. So it's
It's intelligent. It has a heart. It considers uh, the profits and losses of huge corporations. It has very strong likes and dislikes. So all of these are genuine observations from my secret sources, aka the mainstream media. So do check out those links that I'm gonna post below, and stay with me. I'm not referring to COVID here. This is just monsoon blues. Probably just some kind of viral infection or flu, or maybe I should go get a PCR test done. But is it reliable or not? I'm not sure. But let me. So that's about it for now. Stay with me. I'm gonna come back with more. Afghani jalebi, माशूक फरबी, भैया 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 भैया। अरे 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 भाई साहब, अब है कौन यार? ये मेरा शो है यार, मेरे बीच में, शो के बीच में कहाँ घुसे चले आ रहे हो यार? क्या है, कौन हो तुम? सर जमीन हिंदुस्तान को बादशाह खान की सलाम है। अरे बादशाह खान मतलब बच्चन जी, बच्चन साहब यार, आप मतलब गेटअप बदल के आ गए, क्या माजरा क्या है, बताइए। ओए खोजी, हम कोई बादशाह वाचा नहीं, तुम्हारा बाप होती। हमारा नाम बादशाह खान है। अरे बाप रे, मतलब आप अफगानिस्तान से आए हैं, मतलब आप तालिबानी हैं? तो यार मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। फिर भी शो मेरा है तो ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है, आप अगर अफ़गानिस्तान से आए हैं, तालिबानी हैं, तो ये जो आपकी मूछें हैं, इसमें ये मूछें, मतलब मूछों में इतना ताव क्यों है? अफ़गानी आमतौर पे ऐसे तो नहीं दिखते हैं। ओए ब्रदर, हमारा हिंदुस्तान से बहुत पुराना ताल्लुकात होती। हम दरअसल बचपन में हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा होती, और बचपन से हम तुम्हारे यहाँ का राजा महाराजा शिवाजी का बहुत बड़ा फैन होती। इसीलिए हम हमारे मूंछों को ऐसा ताव लगाती। खोजे, हमको लगता है कि तुम्हारा राजा के बारे में तुम लोगों को नहीं मालूम, हमको ज्यादा मालूम। खोजे, अरे वाह, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बादशाह खान जी, आप ज़रा बता सकते हैं कि यहाँ इस मेरे छोटे से शो में आप किस मकसद से आए हैं, और कहीं आपके इन मूँछों का और भी कुछ राज तो नहीं? बताइए ज़रा। वल्ला वल्ला बिरादर, इन मूंछों का और कोई राज नहीं है। तुमको इन मूंछों से तकलीफ होती तो ये लो, हम मूंछ नीचे कर देते। अभी आगे की बात करो। और एक मिनट, हमको ये जो है हमारा सामान हम लाए हैं हमारे साथ, ये सामान हमको ठीक से संभालने दो, फिर आगे की बात करो। पूछो क्या जानना चाहते तुम? हम इधर किस मकसद से आई? पता। ओए, मेरे मन में एक छोटी सी शंका है। अब जैसे लोग, मैंने मतलब टीवी पे वगैरह देखा है, वो कंधों पे बंदूक तान के घूमते हैं, लेकिन आपके हाथ में, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में कुछ और है, तो ज़रा ये इसका कुछ राज है, कुछ क्या मतलब है इसका, बताएंगे प्लीज़? बिरादर, लगता है तुम न्यूज़ चैनल ठीक से नहीं देखती। न्यूज़ चैनल में क्या बात चलती? हम 20 साल के बाद अफगानिस्तान में कदम रखा, हमको अमन चैन चाहती। वी कम इन पीस, वी मीन नो हार्म। इसीलिए हम हमारे बंदूक घर पे छोड़ के आती, और ये बंदूक चलाने की किताब है, ये हम साथ में लेके घूमती है, दिखाने के लिए कि हमको वाकई में बंदूक चलाना आती। और ये हमारे दूरबीन होती, इस दूरबीन को हम हमेशा हमारे साथ लेके घूमते, क्योंकि हमको एक एक चीनी जासूस को पकड़ने का जरूरत है। समझो बिरादर? अब इसके आगे ऊट पटांग सवाल मत करो, सीधे मुद्दे की बात पे आओ। अरे बादशाह खान जी, बढ़िया बढ़िया। बस एक छोटी सी और बात है, एक छोटा सा एक सवाल है।
जैसा मैंने बताया, मैंने अफ़गानियों को, आपको, आप जैसे लोगों को टीवी पर देखा है काफ़ी। तो आप लोग तो काफ़ी गोरे होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं यार। आप जैसा ऐसा थोड़ा मतलब सांवला सा रंग वाला अफ़गानी मैंने देखा नहीं। इसका कुछ राज है तो बताइए। फिर से तुम ऐसे उटपटांग सवाल करती, बिरादर, हम तुमको वार्न करती, ये तुम्हारा आखिरी मौका होती, लेकिन हम इसका जवाब देते। हम 20 साल के बाद वापस आई है। 20 साल तक हम रेगिस्तान में भटकती रहती, उस वजह से हमारा रंग ऐसा होती, समझे? और हमारा रंग से कोई फर्क नहीं पड़ती। अभी भी हमारा बंदूक उतना ही बराबर चलती जैसे 20 साल पहले, समझा? माननीय बादशाह खान जी, आपके जवाब सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपके यहाँ आने का असली कारण क्या है, मकसद क्या है, ये बताइए ज़रा। अभी हम अमूमन बात पे आती। हम तुम्हारे लिए बिरादर एक पैगाम लेके आती। जिस जिस इंसान को भी तुम्हारे मुल्क में डर का माहौल लगती, उस सब इंसान को एक प्लेन में बैठा के हमारे पास भेजो। हम उन सबका डर दूर कर देते। कोई डर दूर कर देंगे शूट करके? वो आप मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं खान साहब? खोजी बंदूक से नहीं, कैमरा से शूट करती। और हमको एयरलिफ्ट पार्ट 2 बनाने का ख्वाहिश होती। तुम्हारा मुल्क का बॉलीवुड का जैसे हमको हमारे मुल्क में मुल्लावुड खोला मार, समझे कि नहीं? अच्छी बात है। तो जनाब बादशाह खान जी, मुझे ये बताइए, आप क्या आपके इस एयरलिफ्ट पार्ट 2 के लिए और अपने अफ़गानिस्तान के मुल्लावुड के लिए आपने किन किन लोगों का नाम चुना है, बताएंगे तो उस पर थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं। बताएगी वाला, इसी के लिए तो हम तुम्हारे शो पे आए। हमारे पास एक पूरा पर्चा पड़ा है उन लोगों के नाम के साथ। इन सब लोगों को तुम प्लेन में भरती और हमारे पास बेचती। हम बताती तुमको, एक एक नाम बताती। रुको, इसमें पहला नाम उसका होती, एक जो आदमी होती, जिसको देख के हम कभी कुछ कुछ होती, लेकिन ये जो आदमी होती, ये आदमी कम और कुछ और ज्यादा है। समझा मेरी बात को? ये जो आदमी बहुत जरूरी है, इसकी जरूरत है हमको, बहुत जरूरत है। You mean to say to go convention। समझ गया। खोजी के जो से तुम क्या समझती, हम अच्छे से जानती। हम पठान के बादशाह है। हमको के जो मांगता, क्योंकि बहुत अच्छा पिक्चर बनाती और कुछ नहीं। आगे का बात सुनो। एयरलिफ्ट पार्ट 2, इसमें हमको एक आइटम सॉन्ग भी डालना चाहती, और ये आइटम सॉन्ग के लिए हमको एक औरत की ज़रूरत होती। तो उस औरत को भेजो जो जनाना कम और कुछ और ही ज्यादा है। ये जो जनाना है, ये तुम्हारा मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क का बहुत तारीफ करती, हमारा बहुत तारीफ की, और इसको भेजो हमारे पास। हम इसको बताती कि हमारे मुल्क कितना अच्छा होती, हमारे मुल्क में हम क्या क्या करती उसके साथ वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसके पहले वो आइटम सॉन्ग हम उससे कराती, पूरा सर से पाँव तक हिजाब पहना के। समझ गया मैं आपका इशारा किसकी तरफ है। बट फिलहाल उस बेचारी पे दर्जनों केस दर्ज हैं। उसके डेट मिलना मुश्किल है। अब कोई और अगला नाम कुछ हो तो बताइए प्लीज। बड़ा मुश्किल होती। हमारे पर्ची में और भी बहुत सारा नाम है। माँ मुश्किल, तुम उस खुदा बख्श नेक बंदी को हमारे पास भेजो जो तुम्हारा मुल्क में रह के तैमूर और शाहजहां जैसे
बच्चों को एक के बाद एक पैदा करती, उसको भेजा हमारे पास। हमारे मुल्क में आज की तारीख में औरंगजेब का बहुत जरूरत होती, तुम उसको हमारे पास बेचते, वो बच्चा उधर पैदा करती। खुदा कसम उसके बच्चे को हम हमारे मुल्क का खलीफा बनाती। आपका लिस्ट तो बढ़िया है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। आपने चुन चुन के लोगों के नाम लिए हैं, ऐसे ऐसे नाम लिए जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। आगे बताइए। बराबर। हमारा पर्ची में अगला नाम किसका होती? और उसको भी भेजो, उसको भेजो जो जो जिसका शक्ल बच्चा जैसा होती। वो आदमी कम बच्चा ज्यादा लगती क्योंकि बच्चा जैसी होती। वही वही जो जो अपने आप को एलियन समझती। उसको भेजा हमारे पास, इधर हमारे गोदी में कंधे पे खिलाएगा, गोदी में और कंधे पे खिलाएगा, उसको तुर्की से ज्यादा खुश रखेगा। हम भेजो जल्दी। उत्तरी समझदार काफ़ी होता है। आपका इनविटेशन मैं उनको ज़रूर भेजूंगा, हो सकता है वो खुद ही चार्टर्ड फ्लाइट लेकर आप से मिलने आ जाएं। और बताती, हमारे पास बहुत नाम है, बहुत नाम है। हमारा पर्ची में अगला नाम है उसका। तुम्हारा मुल्क में एक बहुत ही उम्दा किस्म का बुजुर्ग शेर दिल है, उसको भेजा हमारे पास। वो शेर दिल बुजुर्ग वही जो जो हर अरबा को बम बनाती और फोड़ती, हर अरबा को बम बनाती फोड़ती। अरबा मतलब अरबा अहद, इसने निकला था अरबा, हफ्ते का चौथा दिन, हफ्ते का हर चौथा दिन को वो बम बना के फोड़ती। बहुत उम्दा आदमी लगता हमको, उसको हमारे पास भेज, हम उसको हमारा कमांडर बनाती। अरबा यानी हफ्ते का चौथा दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओ वेडनेसडे द मूवी, हाँ समझ गया आपका इशारा। मुझे तो लगता है कि वो उन्होंने अगर ये बात सुन ली हो मेरी और आपकी, तो वो फिलहाल फ्लाइट पर बैठ चुके होंगे, आपसे मिलने आ ही रहे होंगे। वो तो हमारे लिस्ट में, हमारे पर्ची में बहुत सारे बड़े बड़े नाम होती, लेकिन ये सिर्फ हमारा पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी होती, इम्पोर्टेंट आदमी आती, इम्पोर्टेंट आदमी। तुम्हारे मुल्क का वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होती, वही साइंटिस्ट जो बोलती इधर से आलू डालती उधर से सोना निकालती, उसको भेजा हमारे पास। हम उसको बिल्कुल राजा का वैसा रखेगा। उसका नाम क्या होती? पप्पू खान। पप्पू खान को भेज हमारे पास, हमारे पास आके वो हमको बताएगी। वो इधर से रेत डालती, इधर से न्यूक्लियर बम निकालती, इधर से रेत डालती, इधर से न्यूक्लियर बम निकालती। वाला हम बादशाह बनती, उसकी जल्दी भेज हमारे पास। तुम्हारे मुल्क में इसके लिए कोई काम नहीं, हम काम करते। चलिए बादशाह खान जी, आपसे मिलके क्या कहूँ मैं, अच्छा लगा कहूँ या बुरा लगा कहूँ, लेकिन अच्छा लगा ही कहता हूँ, वरना आप मुझे कर देंगे कैमरे से। मतलब आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और आपके हिसाब से ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट है, मतलब दोबारा भी आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। तो कृपया करके जाने के पहले अगर आपके पास कोई मैसेज हो मेरे श्रोताओं और दर्शकों के लिए, तो प्लीज़ बताइए। ब्रदर, तुम हमारा अच्छा दोस्त बनने के लायक होती, हम यहाँ वापस जरूर आएगी। और मैसेज, कैसा मैसेज? हम कोई मैसेज नहीं देती, क्योंकि हम हमेशा हमारा मैसेज हमारा बंदूक से देती। आज हम बंदूक नहीं लाए तो मैसेज भी नहीं देती। अल्लाह हाफिज, हम जाती। अभी हमको वो चाइनीज जासूस लोगों का जासूसी करना मांगता, इसीलिए हम ऐसे हमारे शक्ल की जाते। लेकिन याद रखो, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा।
that was really, really heavy. I don't know. I forgot everything looking at that odd-looking guy's uh, face and presence. The next time he comes around, I don't know whether I'm supposed to wear a mask or a hijab or one or the other. So that's all for now, folks. Stay safe. Goodbye.